Hello students. So I shall be taking test 2 discussion of sociology. Okay. Here you have a model answer with you, but the focus of discussion would be more on structuring your answer. Okay, because you already have content with you. The problems generally student faces how to construct what should be the introduction and how to go about writing the answer. Okay. Now, a general thing that we would follow in writing every answer should be first, introduction is generally context driven. Okay. Now, what do you mean by context? Context could be of two types. First, you are just telling why this question might have been asked. Okay. Yeah. What is the background in which certain theory or certain concept is being given? Or in the context itself, what you may do is you may pick the key term and you may simply try to define this. Okay. Now, when I say why this question or the broader background of philosophy, here also you may use key terms, but those key terms will give you the broad perspective. ठीक है, आपको ये समझ में आएगा eventually when I'll discuss the answers. Okay, what is broad perspective is like what is the philosophy of this question, like why we are trying to understand this question, why this concept has actually come into picture. Okay, so introduction is this. Now, moving on to the body part. In body part, generally you have to write what has been asked in the question. Okay, so this will be more like descriptive. Okay, so you have to elaborate on each and every component of the concept which has been asked. आप इसको enlarge करोगे, ठीक है, आप इसके बारे में लिखोगे. Now, coming to the conclusion part. In conclusion, you might go for generally writing about the relevance of the concept, or for that matter, if there is any critical analysis, or for that matter, if there are certain dysfunctions or functions in the concept. Okay, or has this concept led to some new concepts? Okay, because in social sciences, what happens? It generally move forward in the form of criticism, counter criticism. If there is one concept, somebody will improve upon that concept and they will go on to give their own concept. So all these elements might come in your conclusion. This is the broad method of writing any answer. Okay, so I hope you follow this. Now, coming on to the question number 1. Ideal type of Max Weber are mental constructs. They do not correspond to the reality. Okay, give your views. Now, here in the question itself, there is no doubt that even Weber has accepted that ideal types are more like a heuristic devices. Okay, they are more like what? Heuristic, yeah, comparative devices. Okay, so obviously when you create something in the form of device, you want to compare something, you will take the extreme position. You will go for extreme position. Okay, why? Because in reality, that particular thing might exist or it might not exist. Okay, so this is what we are talking about, ideal type, and Weber himself has accepted this fact that ideal types are a form of extreme abstraction or extreme generalization, and in reality
they may or may not exist, firstly. Secondly, if there are general changes in the context, in the background of a society, then we might also have to change our ideal types. So ideal types will not remain dynamic. Okay, so if something which is not stable, or something which needs change, or something which is dynamic, that itself shows that irrespective of the fact whether you find it the exact replica of ideal type or not, but to an extent, ideal type is always driven by social reality. Okay, somewhere down the line, you will have to try finding what exactly is ideal type. Or why are you even constructing an ideal type? Because you really want to understand certain social actions, social phenomena, and you want to just compare, you want to have imagination that how this thing is there in society. Do we find this thing somewhere else also or not? Is this functional? Is this relevant, irrelevant? For that, he is giving this broad construct, a comparative device or a heuristic device. So this is a broad ideal type that you have to understand. अब इसमें आपको views बोल रहा है वो, तो views and all would generally come towards the conclusion. See, views आप कैसे दोगे? अब आप यू कैन नॉट गिव अ वेरी जनरलिस्टिक व्यू कि जो मन में आए आप लिख रहे हो, आपको इसी लाइन पे इसको एंड करना होगा. दैट इवन वेबर अंडरस्टूड दिस. ठीक है, एंड ही इज सेइंग व्हाट, इफ वी से आइडियल, एक आइडियल ये भी होता है कि समथिंग विच इज वैल्यूएबल या समथिंग विच इज एस्पायरेबल इन अ सोसाइटी. बट वेबर डिड नॉट मीन एनीथिंग लाइक दैट कि भाई आइडियल टाइप अगर बोला है तो यू वैल्यू दैट थिंग, यू वांट टू बिकम दैट थिंग. ओके, बिकॉज देयर कैन बी आइडियल टाइप्स ऑफ सर्टेन सोशल इविल्स आल्सो. फॉर एग्जांपल, इंडिया में अनटचेबिलिटी. नाउ अनटचेबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज अ सोशल इविल. So do you need to aspire for this kind of ideal type? Are we hinting that ideal type means that a thing that should be aspired for, a phenomena, a social fact that need to be aspired for? No. ठीक है, तो यहाँ ideal type का जो limited interpretation है, that is with regard to a construction, a social construction, a device which comes handy to a sociologist in order to understand any kind of phenomena in the society. ओके, तो कमेंट में आप जब व्यूज देने जा रहे होगे तो वहां आप ये भी चीज बता सकते हो कि इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड दैट आइडियल टाइप इज समथिंग दैट शुड बी एस्पायरेबल और समथिंग which is valuable for the society, because we can construct ideal types even for something which is not desirable. For example, untouchability. Another example is prostitution, etc. तो यहाँ पे आप कहीं जाके conclusion भी डाल सकते हो. Okay, now इसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे हम? नाउ द मोमेंट यू सी आइडियल टाइप, इसका इंट्रोडक्शन ब्रॉडली किया जा सकता है ये बताने के लिए कि व्हाई वेबर इज ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट एन आइडियल टाइप एंड व्हाई इज ही गोइंग फॉर एन आइडियल टाइप इटसेल्फ. वो चाहता तो ही कुड हैव गॉन फॉर वेरी पर्टिकुलरिस्टिक थियरीज आल्सो. ठीक है, वो जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन में ही वुड नॉट हैव ड्रिल्ड इनटू इट. ही वुड हैव सिंपली गॉन फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग अ सोशल फैक्ट, बट ही इज ट्राइंग टू गिव समथिंग ग्रैंड, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, समथिंग इन द फॉर्म ऑफ as general sciences do. What general sciences do? They try to go for certain kind of generalization. Okay, they try to go for some kind of generalization, don't they? Okay, so आपको इंट्रोडक्शन में बताना है कि वेबर बिलोंग टू फॉर्मुलिस्टिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, formalistic school of sociology. So what do people who belong to formalistic school of sociology generally do? ठीक है, they generally try to limit sociology to some general, grand and abstract theories. ठीक है,
जो कि यूनिवर्सली अप्लाई हो जाएं या जो कि, सो दे डू नॉट गो फॉर लुकिंग इनटू particular examples. Okay, for example, अब if Weber will make an ideal type of untouchability, तो बस वो बता देगा कि अनटचेबिलिटी जो जनरली प्रैक्टिस हो रही है वो ऐसी है, बट ही विल नॉट गो ऑन टू रीड एंड स्टडी different kinds of untouchability or say untouchability taking place in section A, section B or some other geographical area. वो particular में नहीं जा रहे हैं वो, ठीक है. He will give a grand and abstract idea of untouchability or ideal of untouchability, ठीक है. इसी को बोलते हैं formalistic school of sociology, ठीक है. And the other school of sociology is the synthetic school, ठीक है. अब सिंथेटिक वाले क्या होते हैं? दे थिंक दैट सोशियोलॉजी इज मोर लाइक एन अप्लाइड साइंस, ठीक है. फॉर्मलिस्टिक वाले क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी इज मोर लाइक प्योर साइंस. तो प्योर साइंस का काम क्या होता है? बस जनरल explain anything generally and move on. You don't have to apply that, you don't have to look for particular application of it, but as opposed to that synthetic school, to which we will see who belong, Emile Durkheim, ठीक है. ये क्या बोलेंगे? We can go for applied science in terms of sociology. तो ये एक broad division है या difference है between pure, या we can say the formalistic school versus the synthetic school. So Weber belongs to what? Formalistic school. इंट्रो में आपको यही बताना है. Therefore he will go for what? Generalization. And why do you need generalization? So that you can go for comparative study, of any phenomena, and for that construction of ideal types become handy, ठीक है. क्योंकि आपके पास एक ब्रॉड, एक फॉर्मुलिस्टिक बेस्ड चीजें हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर डूइंग दैट. ओके, सो इन इंट्रोडक्शन यू शुड राइट दैट मैक्स वेबर बिलोंग टू फॉर्मुलिस्टिक स्कूल, and in order and the formalistic school generally focuses upon the pure sciences, the pure sciences, ठीक है. लिखो, according to formalistic school, sociology as a specific science describes, classifies and analyzes the forms of social relationships, the different forms of social relationship. Okay, now when I say forms, इसका मतलब क्या हो रहा है? You are broadly going for outlines, you are not concerned with the filler, या उसके अंदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो आइडियल टाइप क्या है? आउटलाइंस है. ओके, मतलब they are not looking for what's inside. तो obviously आपको डिफरेंस तो होगा फॉर्म वर्सेस मैटर में. तो इसीलिए आइडियल टाइप्स रियलिटी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इट्स वेरी रेयर. तो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू हैव गिवन अ ब्रॉड प्रीमाइस that since Weber belongs to formalistic school, therefore he'll go for generalization, and for him sociology should be the pure science which should deal with classification analysis only of forms, not of the matter. An ideal type is such one device, okay, which he uses to go for comparison. ये आपका introduction हो गया. Okay, now coming on to the next paragraph. In next paragraph you will obviously define ideal type. What is an ideal type? Okay, so there is definition in your answer sheet also, but I am repeating. An ideal type is an analytical construct that serves the investigator as a measuring tool to ascertain similarities as well as deviations in concrete cases. Okay, इसमें आप इसमें एक चीज और ले सकते हो कि आइडियल टाइप्स
is an important methodology of Weberian sociology. ठीक है, ideal types is an important methodology of Weberian sociology, and this kind of methodology is known as typological analysis. ओके, आप क्या कर रहे हो, आप टाइप बता रहे हो, ठीक है. व्हेन यू टेल अबाउट अथॉरिटी, आप बता रहे हो रैशनल है, कैरिज्मेटिक है, ब्यूरोक्रेटिक है, नहीं है. जब आप ब्यूरोक्रेसी बताते हो तो आप उसके टाइपोलॉजी कर रहे होते हो. दिस इज एन आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बट डेफिनेटली यू विल डेविएट फ्रॉम देयर एंड यू विल फाइंड समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन सोसाइटी व्हिच माइट बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल टाइप यू हैव कंस्ट्रक्टेड. ओके, एंड इफ टुमारो certain changes do come in the society, then definitely you are going to reconstruct your ideal type according to the situation in the society. Okay, ये आपको बताना है यहाँ पे. ये हमारा हो गया typology. Now you have defined ideal type. Now next paragraph लिखो. It should be noted that Weber himself understood that ideal types are not hypotheses. They do not state or imply any ethical ideal. Also, they do not state an average type. And therefore, they do not correspond exactly to any empirical instances. Okay, hypothesis है नहीं, आपको कुछ prove disprove करना नहीं है इसमें, ठीक है. Secondly, कोई आइडियल नहीं है, एज आई टोल्ड यू. थर्डली, दे डू नॉट स्टेट एन एवरेज टाइप. एवरेज टाइप, अगर आप किसी चीज का एवरेज निकालते हो, किस चीज का एवरेज निकालते हो? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ तो आपको पता भी नहीं है इज इट एग्जिस्टिंग और नॉट. यू आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग अ मेंटल कंस्ट्रक्ट इन ऑर्डर टू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस, इन ऑर्डर टू गिव अ टाइपोलॉजिकल एनालिसिस. तो वो एवरेजिंग का भी गेम नहीं है, ठीक है. एवरेजिंग क्या होती है? आपने सिमिलर फिनोमिना कई जगह देखा और उसका एवरेज निकाल के आपने कंस्ट्रक्ट किया. But ideal type might also include those features या those elements जो कभी exist ही नहीं किए, कभी थे ही नहीं. But for your understanding, you think that this might exist. हो गया कहीं तो ठीक है, नहीं हुआ, well and good. Okay? Now जब आपने ये बताया, इतना बता दिया, now we can link here views. ठीक है, आपने broadly बता दिया, ideal type समझा दिया. You can give example of bureaucracy, रिलीजन का आइडियल टाइप का बता सकते हो, किसी भी चीज का, सेक्युलरिज्म का आइडियल टाइप बता सकते हो. यू जस्ट गिव एन एग्जांपल. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द व्यू पार्ट. ओके, देयर यू एक्सपैंड एंड टेल द फीचर्स ऑफ आइडियल टाइप्स. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए देयरफॉर द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टाइप्स कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज. पहला, ideal types are mental constructs and therefore they are subjective in nature. तो इतनी objectivity नहीं आ सकती. Secondly, since they are mental constructs, therefore it is very difficult that they can correspond in reality. Third लिखो, ideal types are theoretical tools, methodological tools, heuristic tools for a sociologist. Next लिखो, ideal types are not instruments which denote statistical average. I told you above also. Next. देखो, ideal types are generally pure or abstract types and therefore do not indicate anything that is normatively desirable. Okay? Next. You need not prove or disprove any ideal type because they are just a construct. Next, it is essentially a one-sided model. Why so? Because जो भी sociologist है उसने ऐसा construct किया है that shows his background. He wants to study something. तो वो उसकी जो भी intricacies हैं या उसके जो objectives हैं उस हिसाब से ideal type construct किया गया है. Therefore, ideal types are essentially one-sided model where you go into extremes and therefore it is very difficult to find the exact replica in reality. Next, ideal types do not provide an exhaustive description of any social phenomena. मतलब यदि हमने बोला this is an ideal type of bureaucracy, अब
ब्यूरोक्रेसी माइट बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. तो आप ये नहीं कह सकते कि ओनली माई आइडियल टाइप इज परफेक्ट आइडियल टाइप. डोंट वरी, some other sociologist will have something other in his mind and he might end up creating another kind of ideal type. Okay, and lastly, ideal types are not rigid, they are dynamic, and therefore they can be subjected to change according to the changes in the society. Okay, and then you may conclude that irrespective of the fact that it is difficult to find something like exact replica, but still the Weber's construct of ideal types helps every sociologist to go for a grand comparative analysis and a typological analysis. Okay, so this is our answer number 1, ideal types with regard to Weber. Now, coming on to the question number 2. What are the problems in observing social facts in Durkheim's view? Now, this question is very straightforward. Okay, what are the difficulties that anybody would find in observing social facts? Because firstly, you will come with your own prejudices, your stereotypes, etc. Okay, secondly, what may happen is you might try to understand social facts from a very individual point of view. But if you do so, then what is the difference between sociology and psychology? Because psychology also does that. Okay, also, when you will restrict that to just one person or just one group, how will you say that it is a social fact? Okay, because social fact is something which is happening in a society, and the one important aspect of social fact is it's sui generis. I mean, it has an identity of its own. Okay, and secondly, it puts lot of constraint on an individual. But ये सब Durkheim जो है, where is he coming from? In answer number 1, I told you that Weber belongs to formalistic school and Durkheim belongs to synthetic school. And for synthetic sociologist, you will have to understand any social phenomena in a broad context. Okay, you will have to go beyond analyzing the individual connections in order to understand cause and effect in every kind of things happening around you. You will have to have a macro view. Okay, and that macro view is determined by what? A lot of small individual actions which are taking place. Now, these individual actions are not simply driven by an individual person or individual actor. That actor is acting not just like an atom. That actor is acting and constrained by the social background, the social phenomena. ये social fact की बात हो रही है यहाँ पे. Okay, so like your last question itself, you will have to start the introduction. The introduction is about what? The grand philosophy or the broad introduction. ठीक है, ये क्वेश्चन आया कहां से, हम जाने कहां वाले हैं. तो Durkheim belongs to synthetic school. Okay, so just write this, right? लिखो since Durkheim belonged to the synthetic school of sociology, therefore for him sociology is an applied science. Sociology is an applied science, and all parts of social life are intimately interconnected to each other. ठीक है, therefore in order to understand any social phenomena, it is must to understand the entire social phenomena. To understand the entire social phenomena. ठीक है, लिखो for Durkheim the concept of social facts become important in this context itself. ठीक है, फिर
According to Durkheim, sociology is a science of social facts. Sociology is a science of social facts. Okay, sociology is a science of social facts. देखो, Durkheim gives the concept of social fact in his work known as Rules of Sociological Method 1895. Rules of Sociological Method 1895. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, ये बताया आपने, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. Durkheim was a positivist inspired by Comte, and therefore Durkheim uses social facts in order to give his various sociological theories. ठीक है, लिखो, according to him, social fact consists of ways of acting, thinking, feeling, external to individual and endowed with a power of coercion by means of which they control him. ठीक है, दी हुई definition, I am just giving the structure. Okay, now अब आपको जाना है प्रॉब्लम्स कहाँ जा रही हैं ऑब्जर्व करने में सोशल फैक्ट में. ठीक है, सो इसमें यू कैन ब्रिंग इन रेमंड एरन. ओके, रेमंड एरन. ठीक है, लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ. अकॉर्डिंग टू रेमंड एरन, social facts of Durkheim operate at two levels. ठीक है, लेवल 1 लिखिए. The subject of sociology must be specific. ठीक है, the subject of sociology must be specific. That means the subject of sociology should be different from the subjects of other sciences. तो other science क्या कर रही है? Anthropology क्या करती है? Anthropology focuses too much on a primitive man, but sociology talks about contemporary society, changing society. Okay, तो इनका जो subject matter होता है वो different होना चाहिए. It should be very specific. Okay, this is one level. Secondly, the subject must be such that it is to be observed and explained. In a manner similar to the facts which are observed and explained in other sciences. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताइए कि जो डर्कहाइम ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है अपने सोशल फैक्ट्स का, उसमें ही प्रॉब्लम है. ठीक है, तो पहला नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. Durkheim gives two main characteristics of social facts. First, social facts must be regarded as things. ठीक है, now underline करो things को. Things means what? You have to treat them more like empirical facts. But do you think that individual behavior can be read empirically? It's very difficult task. Okay, and secondly, Durkheim has not actually defined what does he mean by things. Not very clear. एक problem ये हो गई. दूसरी, difficult to quantify how individual is acting or behaving because it's every individual's act is subjective. तो कैसे बताओगे, कैसे क्वांटिफाई करोगे कि वो 1 किलो हंसा, कि वो 2 किलो रोया? It becomes very difficult. Okay, and the problem comes when he says Durkheim, when he says things, for him
social facts are not reducible to the individual fact. Matlab, you have to try and understand every social fact in its broader social context or phenomena. Okay, so for example, if you find that somebody is throwing acid on a girl, so that is a particular instance, but that instance is not a unique instance. Okay, you will have to understand the social context background of that particular person, and you will have to compare that whether this kind of happening shows a larger picture in the society or not, or this is just a one out of the blue thing which is happening. Okay, तो आपको ये सब करना है. Again, this becomes really difficult. How not to like, because what you're observing is just one fact, individual act or fact happening around you. But according to Durkheim, the social fact should be seen, and it should not be reduced to an individual level. Rather, it should be seen in a larger social construct. तो अगेन दिस बिकम्स डिफिकल्ट. ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इट मस्ट बी रिगार्डेड एज थिंग्स. ओके, तो उसकी प्रॉब्लम हमने बता दी. सेकंड, सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल एंड दे एक्सरसाइज कंस्ट्रेंट. ठीक है, दे आर एक्सटर्नल, दे एक्सरसाइज कंस्ट्रेंट. अब भाई एक्सटर्नल है तो यू कैन नॉट यूज द क्वेश्चनियर काइंड ऑफ थिंग्स विद एन इंडिविजुअल कि भाई आपको ऐसा करके कैसा लगा, because he might not be able to exactly identify why he did certain act or why he did not do certain act. क्यों? Because it is an external. Social fact is sui generis. Okay, and therefore when you will go on to observe any social fact, there are chances you will be biased. You might look that social fact from certain stereotype. You are prejudiced. You are prejudiced, etc. ठीक है, आप ये डिफरेंसेस आप बता के ये दोनों उस पर पे. ठीक है, एंड देन यू कैन कंक्लूड in the criticism that's mentioned in your answer script also, that he couldn't explain why some social facts influence different individuals. Okay, and secondly, you can say that Merton says we should go for middle range theories so that we can go for both universal, like middle range theories क्या होती हैं? यूनिवर्सलिज्म और पर्टिकुलरिज्म के बीच में. ठीक है, तो डर्कहाइम जो कर तो यही रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप क्रिएटिंग मोर यूनिवर्सल थियरीज एंड इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. तो मर्टन कह रहा है गो फॉर मिडिल रेंज थियरीज. बट डिस्पाइट दैट वी शुड प्रेज दैट डर्कहाइम इज एबल टू establish the functional approach in sociology as a discipline. Functional approach. ठीक है, functional approach in sociology as a discipline. What is functional approach? That if something is existing, some system is existing in a society, some institution is existing in a society, some social fact is existing in a society, it is there because it is performing certain function. उसका कुछ तो यूज या मिस यूज या रोल कुछ तो है सोसाइटी में. दैट इज वाई दैट थिंग हैज बीन डन. So trying to bring in the functional school and giving a functional paradigm in order to understand any phenomena in society, that is the credibility of Durkheim. तो यहाँ पे आप conclude करोगे. ठीक है, so this is our second question. We are done with what are the problems in observing social facts in Durkheim's view. Okay. Now moving on to our next question. What is the difference between anomie in Merton and Durkheim? Explain. Okay, so the answer which has been given to you is perfectly fine, but structuring का issue है इसमें भी. ठीक है, now where does the question of anomie comes? अगर आप broadly देखोगे तो anomie का concept आई क्यों रहा है? Because Durkheim will say it is normlessness, and Merton will say this is an outcome of mismatch between goals and methods.
या रोल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट. बट वाई डू यू नीड टू डू दिस थिंग्स, ये सब चाहिए ही क्यों, ये है कहां से, व्हाट इज अ ब्रॉड थियरी या फिलोसफी बिहाइंड दैट. ओके, सो द ब्रॉड फिलोसफी या थियरी बिहाइंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज. तो any society, be it XYZ, whatever, any society exists or it is able to survive because it has certain norms as well as values. Difference between norm and value, norm जो हैं already exist कर रहे हैं, these are values are higher order norms. ठीक है, तो हर सोसाइटी यहाँ लेवल ए से लेवल बी जाने की कोशिश कर रही होती है, तो वैल्यूज यहाँ है, ए यहाँ है. ठीक है, तो ये ब्रॉडली आपको इंट्रो में बताना है. एंड सोशियोलॉजिस्ट्स आर कंसर्न्ड दैट व्हाई देयर इज अ जनरल ब्रेकडाउन of a society, or why there is a deviation in a society, or why generally disorganization or dysfunction creeps into society. Disorganization or dysfunction creeps into society because this shows the crisis of norms and values. ठीक है, तो इंट्रो में आपको क्या बताना है, इंट्रो में लिखिए that any society tries to achieve functions and order. ठीक है, लिखो function and order. देखो, every society tries to achieve such order with the help of norms and values. ठीक है, लिखो norms make it possible to have an orderly intercourse या orderly social intercourse without creating dysfunctions in society. ठीक है, लिखो therefore norms and values exist as guides of conduct for individuals, and for sociologists the concept of social norms takes a special interest. Okay, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लगाइए कि भाई the concept of anomy is related to the dysfunctions in the norms of the society. ठीक है, अब जब ये हो गया तब फिर आप एक एक करके you can pick this what has been given in your answer script only कि भाई डर्कहाइम के लिए एनोमी का मतलब क्या है, नॉर्मलेसनेस. ठीक है, why this happens in due to extreme division of labor. क्यों, मॉडर्न सोसाइटीज आर प्रोन टू दिस. ठीक है, तो जो हमारी ओल्ड सोसाइटीज हुआ करती थी, नॉन मॉडर्न सोसाइटीज, वहां पे कौन सी सॉलिडारिटी हुआ करती थी, मैकेनिक सॉलिडारिटी. एंड मॉडर्न सोसाइटीज में वी हैव व्हाट, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. ठीक है, but the problem is when you go for extreme division of labor you might not even be able to sustain this organic solidarity, और इसलिए नॉर्मलेसनेस आ जाती है, इसलिए एनोमी आ जाती है. ठीक है, सो दिस इज डर्कहाइम्स नोशन ऑफ एनोमी. अब इसके ऑपोजिशन में क्या है, आके मर्टन क्या बोलेगा कि भाई एनोमी इज नॉट समथिंग विच यू कैन कॉल इट नॉर्मलेसनेस. ठीक है,
या एनॉमी इज ऑल्सो नॉट समथिंग वेयर नॉर्म्स आर नॉट क्लियर, क्योंकि नॉर्म्स तो होते ही हर सोसाइटी में, ठीक है, कुछ ना कुछ होंगे, बट एनॉमी इज जनरली एन आउटकम ऑफ फर्स्ट conflict of norms, and secondly incompatibility between goals and means. Incompatibility between goals and means. ठीक है, conflict of norms में you can give an example that like Constitution of India says all Indians are equal, but जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है वो क्या कहता है, ऑल इंडियंस आर इक्वल, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट एक कास्ट एग्जिस्ट करती है, कास्ट के नॉर्म्स क्या हैं, दैट यू गो फॉर मिसट्रीटिंग लोअर कास्ट पीपल, ठीक है, या यू डोंट इंटरवाइन, ये क्या हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉर्म्स हो गया, and this create what's in society, this create anomie in society. ठीक, दूसरा इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मीन्स एंड गोल्स. अब जैसे इंडियन सोसाइटी है, नाउ करंट एग्जांपल दीजिए दैट देयर इज टू मच फोकस ऑन स्टार्टअप कल्चर, ठीक है, तो गोल क्या होगा, ये सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, बट डू यू थिंक दैट एवरीबॉडी हैज गॉट दैट काइंड ऑफ मीन्स? नो, बिकॉज इन इंडिया स्टार्टअप इज ऑल्सो वेरी मच स्ट्रैटिफाइड थिंग. जिनके माँ बाप लोग हैं, जिनके पास पैसा है, कैपिटल है, सोशल कैपिटल है, only they are able to go for startup thing, because startup has a long gestation period. और जब तक आप खाओगे पियोगे क्या, how will you sustain your life? Okay, so this is the difference between means and goals. ठीक है, जैसे अभी कल पार्लियामेंट में जो भी अटैक भी हुआ, so their goal is to get some good job, but they are not getting. ओके, सो मर्टन के लिए ये चीज है, ठीक है. अब कंक्लूड कहां करोगे, कंक्लूड आप ऐसे करिए कि एवरी सोशियोलॉजिस्ट इज अ थिंकर ऑफ हिज टाइम्स, ठीक है, एंड दे हैव डिफरेंट गोल्स. तो मर्टन जो है, ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन डेविएशन, अंडरस्टैंडिंग डेविएशन एटसेट्रा, while Durkheim was more concerned with observation of social facts, ठीक है, and therefore their conception of understanding anomie also differs. ठीक है, यहां पे आप कंक्लूड कर सकते हो बिल्कुल. so this is our third answer, what is the difference between anomie and Merton's anomie. explain है, तो इसमें इतना critical analysis नहीं करना है, आपको explain करते हुए जाना है, बट इंट्रो में broadly बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आया ही कहां से, ठीक है. so this is question number 3. Let's proceed to question number 4. How does Weber use the notion of ideal types in his theory of bureaucracy? Okay, so bureaucracy, as we all know, is a very a fine example and very special example of Weber using his own concept of ideal type. But अब इसमें भी bureaucracy आपसे specific पूछा है, तो आंसर में तो लिखा है सब चीज कि he is giving characteristics of bureaucracy etc. But from where this bureaucracy, the concept of bureaucracy is coming from? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना है दैट ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी आ कहां से रहा है. तो इंट्रो में वेबर is a sociologist who establishes what? Link between power, legitimacy and authority. We all know this, है कि नहीं? Link between power, legitimacy and authority. So according to Weber, what is authority? Authority is equal to legitimacy.
प्लस पावर, मतलब in terms of Weber, legitimate power is authority या legitimate use of power is authority. Okay, now in order to understand authority, he goes for construction of ideal type. He gives ideal types of authority. उसमें से he talks about 3 kinds of authority. ठीक है, तो charismatic है, legal, rational है, etc. Okay, you don't have to tell all these, just tell, then come. इतना intro होना चाहिए. तो intro में क्या लिखोगे? That Weber as a sociologist gives a link between legitimacy, power and authority. For him, authority is legitimate use of power. But in order to understand authority, he goes for his heuristic device known as ideal type. Next paragraph. He constructs ideal types of authority. फिर आप वो तीनों बताओ and फिर बताओ bureaucracy for him represents legal rational authority. Legal rational authority. ओके, ये बताना है आपको. अब थर्ड पैराग्राफ में बताइए कि भाई ब्यूरोक्रेसी आई क्यों. भाई ब्यूरोक्रेसी के बिना भी तो काम चल सकता था. तो यू शुड राइट दैट he gives so much importance to bureaucracy or the rise of bureaucracy because he thinks he gives following reasons. तो क्या क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मनी इकोनॉमी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्वालिटेटिव चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, कॉमा, demand for objectivity, demand for experts in administration, then need for the rational interpretation of laws, etc. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी ब्यूरोक्रेसी आई है. एंड फॉर वेबर, अब नेक्स्ट पैराग्राफ बताइए. फॉर वेबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ब्यूरोक्रेसी आर, वो सब बताना है. आई एम जस्ट गिविंग द ब्रॉड आइडिया. पहला है fixed official jurisdiction area. Second, hierarchy of authority. Third, clear-cut division of labor. Fourth, appointment in bureaucracy is based on eligibility. Next, fixed salary, allowance and pension system. Next, office and maintenance of files. Next, appointment of officials on full-time and long-term service basis. Next, difference between private matter and official issues. Next, supervision of work by higher officials. Next, systematization of official relations with officials. Next, political neutrality. Next, guidance by past procedures. ठीक है, तो ये आपने कैरेक्टरिस्टिक बताया. आप कंक्लूड कहां करेंगे? That since this is an ideal type, therefore the exact replica of such a bureaucracy is a misnomer. For example, a lot of time, especially in developing societies like India, it becomes really difficult for bureaucrats to be politically neutral. ठीक है, नहीं रह पाते ना न्यूट्रल. क्यों? उनको बोला जाएगा एबीसी प्रोसीजर फॉलो करना है. बट इफ देयर इज सम विमेन जो बहुत गरीब है एंड शी नीड्स सम स्पेशल हेल्प, तो ब्यूरोक्रेट्स ड्रिवन बाय human rationality, not by instrumental rationality, they will go and give support to her. Okay, तो यहां आप conclude कर सकते हो कि since this is an ideal type, it might not you might not find the exact replica. For example, the ideal type bureaucracy should be driven by political neutrality or instrumental rationality, but in reality this might not be the case. ठीक है, तो ये आपका broad answer हो गया bureaucracy वाला. Okay, so this is question number 4. Now let's move to next question. Describe the functional prerequisites of a social system as given by Talcott Parsons. Examine in the context of university as a social system. Okay, so here we know what are the functional prerequisites. जो Parsons है वो क्या है? He is a functionalist, structural functionalist, we can say that. ठीक है, मतलब इसकी रूट्स कहां दिख रही हैं आपको? डर्कहाइम में.
I told you in the last discussion. अब जो फंक्शनलिस्ट होते हैं या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होते हैं, उनका एस्पेक्ट क्या होता है? दैट एवरी सोसाइटी, in order to sustain, it should have certain institutions, certain structures which must perform certain functions. If those functions stop happening, society will disintegrate, there will be disorder in the society, etc. So society cannot sustain without structures performing their unique functions, and they should also not interfere into each other's function. What if tomorrow आपके एजुकेशन सिस्टम में रिलीजियस सिस्टम इंटरफेयर करने लग जाए? सो यू विल फाइंड दैट योर एजुकेशन सिस्टम माइट नॉट बिकम सो रेलेवेंट. जैसे इंडिया में ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या होता था कि रिलीजन या मिडिवियल सोसाइटी में रिलीजन यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ से. ओके, देयरफॉर वी सी द डिक्लाइन ऑफ सोसाइटीज इन टोटल. तो फंक्शनलिस्ट ये सोच रहे हैं. अब जो पार्सन्स है वो भी क्या करने की कोशिश कर रहा है? ही वांट्स टू गिव अ grand theory of systems, yeah, social systems, and within this he wants to explain the interaction between action, which is social action, which is happening in certain environment, okay, this social action is happening in certain environment. That environment could be external या फिजिकल, या इट कुड बी सोशल एनवायरमेंट. ओके, एंड विद दिस ही वांट्स टू अंडरस्टैंड, और ही वांट्स टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ स्ट्रक्चर्स इन अ सोसाइटी perform certain functions and how does a society sustains. ठीक है, या how does a society is able to manage various fissures and various disorganizations etc. तो इसके लिए हर सिस्टम को they had to do certain minimum bare functions. अगर ये नहीं कर रहे हैं minimum functions, there are chances that society will not sustain, it will disintegrate. तो इन minimum functions को, these must to do things which any system must do in order to go smoothly, इनको बोला जाता है functionals prerequisites. ठीक है, functional prerequisites, because if you don't do them it becomes really difficult to sustain a pattern in a system. ठीक है भाई, सिस्टम होता क्या है? सिस्टम इज sustained interaction pattern, sustained pattern of interaction within या between various units, अब जब यही नहीं होगा तो how do you expect a society to function as a whole? तो आपको इंट्रोडक्शन में बताना है कि Parsons he is trying to give a conceptual structure wherein he wants to synthesize the analysis of individual action, analysis of a large scale social system etc. ठीक है, फिर इसी में बताइए that for या ये बताइएगा कि Parsons being a structural functionalist gives a functional theory of the social system. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताइए व्हाट इज द फंक्शनल थियरी. लिखो, फंक्शनल थियरी looks upon the society as a social system which is believed to perform certain functions. ठीक है, and
no society can sustain if 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 a society is not able to perform them. Okay, this is known as functional prerequisite. Functional prerequisite. Next paragraph में लिखो. From a functional perspective, societies survive and function only. Societies survive and function only if certain tasks are accomplished. ठीक है, अब यहाँ पे you can give an example that without socialization you can never create good citizens for a society, or you cannot create functioning human beings. भाई कोई आया, आपने उनको एजुकेशन नहीं दी, उनको नॉर्म्स एंड वैल्यूज में सोशलाइज नहीं किया, दिस विल लीड टू एनार्की. Okay, society can never function without socialization. So what is this socialization? This is a functional prerequisite that in order to sustain, in order to ensure that society moves in the future and it gets the requisite amount of manpower, you need to do socialization. तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना है. ठीक है, तो आपने जनरल बताया. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताइए that for Parsons the functional prerequisites which a system or a social system must do is known as AGIL: adaptation, goal attainment, integration and latency. ठीक है, adaptation, integration, goal attainment, integration and latency. latency को हम ये भी बोलते हैं pattern maintenance या and tension management. And tension management. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपको एक एक बताना है. एडेप्टेशन मींस यू हैव टू अडेप्ट विद द इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो यूनिवर्सिटी को क्या करना होता है, उनको फंड्स लगते हैं. ठीक है, दे नीड टू चेंज, उनके गोल्स होने चाहिए कुछ. दे नीड स्टूडेंट्स. एडेप्टेशन को कंपटीशन करना है, जैसे कि कोविड आ गया तो सबको ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ी. दिस इज देयर एडेप्टेशन. गोल अटेनमेंट, दे नीड टू पब्लिश सर्टेन मिनिमम पेपर्स एटसेट्रा, नहीं तो उनकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं आएगी, या उनके गोल होंगे टू बी इन टॉप 10, टॉप 5, व्हाटएवर. ठीक है. इंटीग्रेशन, दैट एवरी ईयर सम न्यू स्टूडेंट्स कम इनटू द सीन. ठीक है, और एक आपके एक यूनिवर्सिटी में मल्टीट्यूड्स ऑफ ओपिनियंस होते हैं, उन सबका इंटीग्रेशन करना ताकि दे फील दैट दे बिलोंग टू सर्टेन यूनिवर्सिटी. And without doing that it becomes very difficult for going goal attainment. भाई goal attainment तो students ही करवाएंगे ना यूनिवर्सिटी के, या टीचर्स करवाएंगे. Now if a teacher or a student is feeling lost, not connected, तो वो फिर integrated नहीं होगा. integrated नहीं होगा तो system क्या होगा, dysfunction करने लग जाएगा. And latency is basically with what, with regard to values and norms. ठीक है, तो हर सोसाइटी जो है, हर यूनिवर्सिटी जो है अपनी यूनिक कुछ वैल्यूज होंगी. ठीक है, अब हो सकता है जो न्यू स्टूडेंट्स आए उनको वैल्यूज पसंद ना हो, तो दिस विल लीड टू व्हाट, दिस विल लीड टू टेंशन इन द सोसाइटी, इन द यूनिवर्सिटी, इन द सोसाइटी. तो उसको मैनेज करना, तो उसके लिए क्या होगा कि आप वेंट आउट करो. तो वेंट आउट कैसे करोगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे. ठीक है, हनी सिंह आएगा गाना गाने एटसेट्रा. दिस ऑल विल हैपन. So this is what AGIL, these are the functional prerequisites, and without them having a system cannot sustain. Okay, तो ये हो गया इसका ब्रॉड AGIL. आप कंक्लूड कहां करोगे, कि कंक्लूड आप यहां बता सकते हो कि दिस थ्योरी एक्चुअली जो है आपको किसी भी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने और उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी सिस्टम्स का इंटरेक्शन हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने में इट हेल्प्स. ठीक है, सो दिस इज टैलकट पार्सन्स फंक्शनल प्रीरेक्विसाइट. व्हाट आर फंक्शनल प्रीरेक्विसाइट? दीज आर द बेसिक मिनिमम फंक्शंस विच एनी सिस्टम मस्ट डू in order to ensure that it is sustained. Without them performing these things, ये नहीं होगा. इसी को बोलते हम पार्सन की एजिल स्कीमा. ठीक है, उसने एजिल स्कीम दी. ठीक है, बेयर मिनिमम ये करना है. सो दिस इज योर टैलकट पार्सन्स क्वेश्चन नंबर 5. Now moving on to the next question. Does scientific method make sociology a science? Illustrate your answer with Durkheim's method. Okay, अब देखो
इसका ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट क्या है? द राइज ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, राइज ऑफ सोशियोलॉजी इज हैपनिंग अराउंड विच टाइम्स? पोस्ट रेनेसां, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूरोपियन सोसाइटी इज गोइंग थ्रू लॉट। अब उसमें क्या हो रहा है? देयर वाज अ राइज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो सोशियोलॉजी की शुरुआत ही इससे हुई है, दे वांटेड टू क्रिएट अ साइंस ऑफ सोसाइटी। ओके, दैट इज व्हाई इट हैज बीन कॉइन्ड सोशियोलॉजी। किसने बोला है? ऑगस्ट कॉम्ट ने कॉइन किया है, ठीक है। सो इसकी ब्रॉड फिलॉसफी क्या है इस क्वेश्चन की? दैट देयर इज एन इनहेरेंट डिबेट whether the methods and goals of sociology can be scientific or not. अब आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि भाई साइंस होती क्या एग्जैक्टली। तो साइंस इज व्हाट? सिस्टमेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, ओके। एंड साइंस अगेन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्योर साइंस, अदर इज सोशल साइंस। अब प्योर साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिविटी, वेरीफाइबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एटसेट्रा। लेकिन सोशल साइंस जनरली बेस्ड ऑन व्हाट? एब्स्ट्रैक्शंस, they cannot be predictable, they are not that objective, they are comparatively subjective. तो इन सब की डिबेट में है, can we call sociology, its methodology scientific or not? And because of these debates, there is also a debate what should be the broad idea of sociology, how sociologists should study society, ठीक है। तो उसमें से एक स्कूल हो गया आपका क्या? फंक्शनलिस्ट स्कूल, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया आपका? एक हो गया फॉर्मलिस्टिक स्कूल और द स्पेशलिस्टिक स्कूल। तो वो क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी बहुत जनरल या प्योर साइंस होनी चाहिए, बहुत ब्रॉडली फॉर्म्स को पढ़ना चाहिए, नॉट गेट इनटू डिटेल्स। इन अपोज टू दैट जो दूसरे हैं वो क्या कहते हैं? इट्स अ सिंथेटिक डिसिप्लिन। आप इसमें फॉर्म्स के अलावा मैटर भी पढ़ें, उसके डीप में जाएं, इंटरकनेक्शंस पढ़ें। तो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे वेबर, सेकेंड में आ जाएंगे आपके जर्खाइम। बट देयर इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग that sociology is more like a social science और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहां आपको कंक्लूड करना है। बाकी ये जो आंसर में इन्होंने बताया है कि भाई इसको साइंस कैसे कह सकते हो, तो कॉज इफेक्ट है, प्रिडिक्शंस हैं, जनरलाइजेशन है, दैट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग, वो आप एक जगह लिख सकते हो। बट द एक्चुअल आंसर शुड बी यू हैव टू टेल फ्रॉम वेयर दिस डिबेट इज कमिंग फ्रॉम। तो डिबेट तो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में ही आ रही है, क्योंकि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस ही उस समय हुआ है व्हेन there was a rise of scientific inquiries etc, there was a rise of rationalism, scientific temper etc, and therefore sociologists like Comte etc believe that you can study society, you can study social facts just like as being done in science, okay. But we cannot totally give the methods of natural science or pure science to sociology, because sociology is a social science जिसमें कि प्रिडिक्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ये सब नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज सोशल एक्शन इज समथिंग विच यू डोंट डू इन आइसोलेशन, सोशल एक्शन इज ऑलवेज डन इन अ कम्युनिटी। आप इसमें मार्क्स का एग्जांपल दे सकते हो कि फॉर मार्क्स मैन इज व्हाट? स्पीशीज बीइंग, देयरफॉर मैन व्हाटएवर एक्शन ही डज इन ग्रुप, ठीक है, ही डज विद एवरीबॉडी एल्स। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप ये इसको फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। So even when Marx says that his socialism is scientific, in general, in common sense, his socialism is based upon what? Is based upon the context of a society. Therefore, वो class in itself, class for itself जैसे concepts दे रहा है। Okay, so its question का broad introduction should be that the debate around the methods and objectives and the outcomes of sociology, whether it's scientific or normative, lies in the fact that sociology emerged around the Renaissance times, when the revolutions like French Revolution, Industrial Revolution made the static European society a dynamic one. ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताओ, साइंस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज फिजिकल साइंस एंड अदर इज सोशल साइंस। बट if we try to understand science, science means systematization of knowledge, okay. Now you have to differentiate that while pure science or while the physical science generally depends upon, yeah, generally its theories, yeah, its
it is more generalized, it goes for predictability, it goes for objectivity. Such kind of objectivity is not possible in sociology. Why? Sociology is the science of society. Okay, next paragraph पे तो देखो, but still there is a general consensus that sociology is a social science, although there is a difference between two schools of thought. ठीक है, these two schools of thought generally define that as a social science what should be the scope of sociology. तो पहले कौन से हो गए आपके, स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल? School, they will say what? You have to go for grand generalization, abstraction. ठीक है, आपको फॉर्म बस देखना है, आउटर आप देखिए. फॉर एग्जाम्पल आइडियल टाइप ऑफ वेबर. As opposed to this, we have other school of thought which is known as synthetic school. They go for what? Interdisciplinary nature of science, of sociology. Interdisciplinary. ठीक है, therefore they will go for what? Interrelationships between various social facts, social phenomena. ठीक है, तो we cannot say that sociology is a pure science, but sociology is a social science. ठीक है, now conclude कहां करेंगे, लिखो therefore we can say that the general nature or characteristic of sociology is, first, ऐसे लिखना, first, sociology is an independent science. ओके, क्यों आई है सोशियोलॉजी? उससे पहले भी तो बहुत थी, बिकॉज यू वांटेड अ टिपिकल subject, a discipline which should understand how society functions or not functions. Okay, second, sociology is a social science and not a physical science. Third, sociology is a categorical and not a normative discipline. आप सोशियोलॉजी में जनरली सोशल फैक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये नहीं बता, वैल्यू, यू डोंट डू वैल्यू जजमेंट कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, इफ अ सोशियोलॉजिस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, देन ही इज नॉट वैल्यू न्यूट्रल, ही इज ब्रिंगिंग हिज ओन वैल्यूज. तो सोशियोलॉजी की आप जब क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव पढ़ते हो, यू अंडरस्टैंड दैट सोशियोलॉजी ट्राइज टू बी एज मच ऑब्जेक्टिव एज इट कैन बी, बट नॉट इन टर्म्स, in comparative terms with regard to natural or physical sciences. Next, sociology is a combination of pure as well as applied science. Why? Pure क्यों है? आपने बता दिया. कौन सा स्कूल? पहला स्कूल फॉर्मलिस्टिक स्कूल. अप्लाइड किस में आ जाएगा? सिंथेटिक स्कूल में. ठीक है. Next, sociology is relatively an abstract science and not a concrete science. Next, sociology is a generalizing science and the scope of particularization is limited. ठीक है. Next, sociology is a general science and not a special social science. Next, sociology is both rational as well as empirical science. Sociology is both empirical as well as rational social science. ठीक है, तो आप conclude करिए कि this debate, there should be no debate around it, because sociology as a discipline tries to incorporate both the worlds. It tries to incorporate the values also as well as facts also. And Weber क्या बोलता है? There cannot be complete fact value dichotomy. There cannot be complete fact value dichotomy. क्यों? वेबर का कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टीहेन. ठीक है, यहां पे आप कंक्लूड कर सकते हो. तो सी, यू गो बियॉन्ड व्हाट हैज बीन आस्क्ड. यू आर आल्सो ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट थिंकर विंकर अपना थोड़ा बहुत आप ला सकते हो. यू कैन गिव इन लॉट ऑफ एग्जांपल्स. मार्क्स का एग्जांपल मैंने दिया था आपको, तो मार्क्स की जो क्लास है
वो कॉन्सेप्ट ही क्या है, दैट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. गॉट इट? तो दिस इज योर 6. नाउ कमिंग ऑन टू 7. 7 is very easy. According to Marx, how are human beings alienated from the human potential and what does he suggest to change it? ठीक है, तो मार्क्स का इसमें हमको लिखना है theory of alienation. Okay, Marx's theory of alienation. But here आपको ब्रॉडली जो कॉन्टेक्स्ट देना है, इसमें इंट्रोडक्शन में यू हैव टू टेल कि ये भाई यंग मार्क्स की थ्योरी है ये. ठीक है, मैच्योर मार्क्स इज व्हाट? मैच्योर मार्क्स इज structuralist Marx, who does not talk about the human agency etc. But जो young Marx है, his concern is what? His concern is about the dehumanization, estrangement. ठीक है, तो see there Marx जो है दो हैं. ठीक है, मतलब दो क्या है in terms of thought process. One is young Marx and other is mature Marx. ठीक है, जो यंग मार्क्स है इसको हम बोलते हैं ह्यूमनिस्ट. वाई? हिज कंसर्न इज ह्यूमन फ्रीडम या इमेंसिपेशन. ह्यूमन फ्रीडम या इमेंसिपेशन. और जो मैच्योर मार्क्स है, ही इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट. इसका कंसर्न क्या है? वायलेंस, रेवोल्यूशन. ठीक है, तो ये आपका ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, दैट मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन इज एन आइडिया ऑफ यंग मार्क्स हु वाज अ ह्यूमनिस्ट. ठीक है, बट इट मस्ट बी नोटेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन इज नॉट यूनिक टू मार्क्स. यूनिक नहीं है, क्यों? उसके पहले किसने बात की? किससे इंस्पायर्ड था? हेगल एंड फ्यूयरबाख. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका. नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन व्हाट इज एलिनेशन. ठीक है, तो एलिनेशन क्या होता है? इट्स सेंस ऑफ पावरलेसनेस, आइसोलेशन, मीनिंगलेसनेस एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स व्हेन दे आर कन्फ्रंटेड विद सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंडीशंस दैट आर नॉट in control of them. Okay, लिखो. For Marx alienation means man does not remain species being. Man does not remain a species being. What do you mean by species being? That man is a social animal. Man का पहला एक्ट क्या है? इकोनॉमिक एंड क्रिएटिव एक्ट. बट कैपिटलिज्म क्या करता है? इसको छीन लेता है. Man becomes just what? Cog in the wheel. ठीक है, या मार्क्स की लैंग्वेज में मैन बिकम्स व्हाट? एन इम्पावरिज्ड थिंग. एन इम्पावरिज्ड थिंग. ठीक, तो ये आप एक्सप्लेन करिए. नेक्स्ट बताइए, मार्क्स के लिए एलिनेशन इज अ 4-fold प्रोसेस. मार्क्स के लिए एलिनेशन इज अ 4-fold process because it happens at 4 levels. ठीक है, क्या 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 होता है? पहले worker alienate from the object that he produces, then the process of the production, then from himself, then eventually from the communities of fellow men. तो सोसाइटी से भी उसका alienation हो जाता है. ओके, एंड सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ डज ही सजेस्ट टू चेंज इट? तो फॉर हिम alienation will end in what? Communism. Why? Because communism will be based on, or it's a system which is based on what? From each according to his ability. From each according to his ability, to each according to his नीड्स. ठीक है, और कम्युनिज्म में क्या होगा? देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन वर्क, एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी.
there will be no difference between work, activity and creativity. तो कम्युनिज्म में क्या होगा? मैन विल अगेन बिकम स्पीशीज बीइंग एंड हिज एलिनिएशन विल एंड. ठीक है. अब एक लेवल आगे जाना है तो आप बता सकते हो कि सिमिलर आइडियाज वी सी इन व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल मैन. ठीक है, बस you can conclude. So this is his concept of alienation. You have to tell definition where it's coming from. Young Marx, he was a humanist, और किस process पे हो रहा है, and then conclusion में you have to tell the solution. It's happening in communism, and this is similar to the idea of one-dimensional man. Okay, so this is your test number 2. Okay, you can refer to this main script which has been given to you, but you can structure your answer around what I have discussed in this discussion. So this is all from my side. Thank you. Have a good day.